Hello students, a beautiful and fresh morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. And today we would be doing the last section, that is section 3 from your unit 6, and that is the poem The Haunted Houses, and this would be the last poem from your course book also. And with this we would be done with our course book syllabus for term 2. So let's see the poem. The name of the poem is Haunted Houses. As you can see the title itself, it feels scary, right? Or spooky, you can say, or something which makes you afraid, right? Or frightened. But over here, the poet has total different perspective regarding the ghost. So this poem, The Haunted Houses, written by Henry Wadsworth Longfellow. He has a different approach towards the ghost. He believes that ghosts are not the one which we have actually imagined in our mind. According to us, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि ghost क्या होता है, डरावने होते हैं, right, scary होते हैं, and they are there to trouble us, right? But according to the the poet over here, he feels that they are totally harmless. They are not there to scare us. They are just over there along with us in the form of memory. हमारे जो ancestors है या हमारे जो grandparents है, right, या फिर हमारे जो भी loved ones है, once they die, they don't leave this place where they were dwelling before. जैसे कि ये पोएम के अंदर दिखाया गया है कि जो भी लोग मर जाते हैं, right, they do dwell in their place. उनकी जो आत्मा होती है, या यहाँ पे जो spirits यूज़ किया गया है word, they are spirits stay over there in the house. They don't harm anyone or they don't trouble anyone. In fact, they are happy person. They are not at all happy. They are not at all unhappy over here. ठीक है, जैसे कि हमारी सोच होती है कि वो हमें डराने के लिए या फिर ट्रबल करने के लिए इसीलिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो पोएट है उसकी सोच बिल्कुल अलग है. ही इज़ टोटली हैविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द घोस्ट, and that's what he has described in this poem. So let's just read about Henry Wadsworth Fellow first before moving ahead with the poem. Henry Wadsworth Longfellow was born in 1807 and he died in 1882. He was an American poet and educator. His works include The Immortal Paul Revere Ride, The Song of Hiawatha, and Evangeline. Many of his poems are about myths and legends. He is remembered as the first American to translate Dante Alighieri's Divine Comedy. Much of Longfellow's work is lyric poetry, but he did experiment with many forms, including hexameter and free verse. So this is a little bit of information which is already given in your textbook. Now let's move towards the poem, and before moving ahead with the explanation, we would just recite this poem. So let's see that. Haunted Houses by Henry Wadsworth Longfellow. All houses wherein men have lived and died are haunted houses. Through the open doors, the harmless phantoms on their errands glide, with feet that make no sound upon the floors. We meet them at the doorway, on the stair. Along the passages they come and go. Impalpable impressions on the air, a sense of something moving to and fro. There are more guests at table than the hosts. Invited, the illuminated hall is thronged with quiet, inoffensive ghosts, as silent as the pictures on the wall. The stranger at my fireside cannot see the forms I see, nor hear the sounds I hear. He but perceives what is, while unto me all that has been is visible and clear. We have no title deeds to house or lands. Owners and occupants of earlier dates, from graves forgotten, stretch their dusty hands, and hold in mountains still their old estates.
The spirit world around this world of sense floats like an atmosphere, and everywhere wafts through these earthly mists and vapors dense, a vital breath of more ethereal air. Our little lives are kept in equipoise by opposite attractions and desires. The struggle of the instinct that enjoys, and the more noble instinct that aspires. These perturbations, this perpetual jar of earthly wants and aspirations high, come from the influence of an unseen star, an undiscovered planet in our sky. And as the moon from some dark gate of cloud throws o'er the sea a floating bridge of light, across whose trembling planks our fancies crowd into the realm of mystery and night. So from the world of spirits there descends a bridge of light connecting it with this, o'er whose unsteady floor that sways and bends wander our thoughts above the dark abyss. Okay, so students, now let's see the poem stanza wise, and we would go through the explanation line by line. All houses wherein men have lived and died are haunted houses. So what does the poet say over here? That there is not a specific house which is abandoned and you can say that that one is haunted, जहाँ पे कोई रहता नहीं है या फिर जहाँ पर लोगों ने रहना छोड़ दिया है. It's not necessary that only such houses can be considered as haunted house. All the houses, that means the house in which you live and in which I live, you can also consider those houses to be haunted houses because there men have lived and died. मतलब कोई ना कोई रहा होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, राइट, हमारे एंसेस्टर्स. That means if your ancestors have lived and died over there, then you can consider that your house is also haunted because their spirits are present over here. Okay, although you can say that they are harmless, but yes, they are present. So the poet is having a different perspective, as I told you before, कि उनका जो नज़रिया है वो totally different है. He doesn't consider ghost to be fearful or harmful or scary, but according to him, the ghosts are harmless. We'll see over here in the second line it says so. So all houses wherein men have lived and died are haunted houses. Through the open doors, the harmless phantoms on their errands glide, with feet that make no sound upon floor. So here ghost to me, phantoms means ghost. And he says that those ghosts are harmless. That means they are not going to harm us. Okay. हमारे जो घर है, which are considered to be haunted according to the poet. Okay. According to the poet, हमारे जो ancestors है वो हमेशा उनका जो soul रहता है वो dwell करता ही है. वो जहाँ पे रह चुके हैं वहाँ पे उनका soul dwell करता है. That means it stays over there. It comes and goes. So how do they come? They come through the open doors. On their errands glide. Errands means their regular work for that, for which they need to go outside and complete that work. Okay. And he says that the harmless phantoms on their errands glide. They keep on moving. Glide means they keep on moving and they come through the open doors to complete some of their work, and they just come for a short visit and then again leave. But when they come, their feet makes no sound upon the floors. That means when they come inside the house, you won't be able to make it out क्योंकि उनके जो पैर है वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं. They don't make noise when they walk. Okay. And where do we meet them? We meet them at doorway, on the stair, along the passages. They come and go. Impalpable impressions on the air. A sense of something moving to and fro. So where do we meet this ghost? Right? Where do we meet the souls or spirits? At the doorway, on the stair, along the passages. Passages means corridors. And they come and go. That means they keep on coming and going on regular basis. और हमें हर जगह मिल सकते हैं. घर में कोई भी जगह पर मिल सकते हैं. डोरवे हो या फिर स्टेयर्स पर मिल सकते हैं या फिर जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे मिल सकते हैं.
बट इट्स नॉट नेसेसरी कि उस चीज़ का सेंस हर किसी को हो, क्योंकि वो कैसे है, दे आर हैविंग इम्पाल्पेबल इम्प्रेशंस ऑन द एयर. इम्पाल्पेबल मीन्स अननोटिसेबल और अनक्लियर, यू कांट मेक इट आउट. जैसे कि एयर है राइट हमारे आसपास, कैन यू मेक आउट दैट यू हैव द लेयर ऑफ एयर अराउंड यू? नो, राइट, वी कांट मेक इट आउट कि हमारे आसपास एयर है. वैसे ही ये जो spirits है, they are also having impalpable impressions. That means their presence is totally unnoticeable, or you can say we are not able to make it out कि वो लोग वहाँ पे है, उनका presence हमें पता नहीं चलता है. जो उनका presence है वो हमको पता नहीं चलता है. It is a sense of something moving to and fro. That means जिसको पता चलता है उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि समथिंग इज मूविंग ऑन टू एंड फ्रो. जैसे कि एयर है राइट, हम एयर ब्रीथ करते हैं तो हमको पता है राइट कि देयर इज समथिंग लाइक एयर विच इज मूविंग और विच इज देयर इन द हाउस. इन द सेम वे द घोस्ट और द स्पिरिट्स आर देयर इन द हाउस विच आर अननोटिसेबल, विच यू कांट सी, राइट, जस्ट लाइक एयर. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमको कहाँ पे मिल सकते हैं ये घोस्ट, डोरवे, स्टेयर्स या कॉरिडोर्स में. लेकिन वो कैसे है, दे डोंट हैव, वी कांट मेक आउट देयर प्रेजेंस जस्ट लाइक एयर. जैसे कि एयर मूव होती है तो हमें पता चलता है कि येस एयर इज प्रेजेंट ओवर देयर. इन द सेम वे दीज घोस्ट आर ऑल्सो इम्पाल्पेबल. दैट मीन्स दे आर अननोटिसेबल. ठीक है, हमको नहीं दिखते हैं. वो एयर जैसे नहीं दिखती है वैसे ही ये घोस्ट भी नहीं दिखते हैं. लेकिन सिर्फ कुछ मूव हो रहा है उस चीज़ का हमें सेंस हो सकता है क्योंकि वो हवा की तरह है इसलिए. There are more guests at the table than the host invited. The illuminated hall is thronged with quiet, inoffensive ghosts, as silent as the pictures on the wall. So the poet says that कि उस घर के अंदर होस्ट ने जितने लोगों को इनवाइट किया था उससे ज़्यादा गेस्ट आ गए हैं. Okay, there are more guests at the table than the host invited. Host means the person who is calling everyone for the party, right? Or फिर the person who has invited everyone for the party, right? That is called host. तो उसने जितने गेस्ट को बुलाया था उससे ज़्यादा गेस्ट आ गए हैं. They are invited. The illuminated hall is thronged with quiet, inoffensive ghost. Illuminated means the hall is lighten up, मतलब पूरा जो हॉल है वो लाइट से अच्छी तरह से लिट हो गया है. That means it is bright and it is thronged with quiet, inoffensive ghost. And that illuminated hall is filled. Thronged means it is filled with quiet and inoffensive. Quiet है, ghost कैसे है, बिल्कुल भी harmful नहीं है. जैसे उसने पहले बताया कि the ghosts are not at all harmful. So they are quiet. वैसे ही उनका प्रेजेंस पता नहीं चल रहा है. एंड दे आर ऑल्सो क्वाइट इनऑफेंसिव. एंड ऑफेंसिव मीन्स दे आर नॉट एट ऑल अनॉयड, और यू कैन से ओवर हियर दे आर हार्मलेस. ओके, इनऑफेंसिव मतलब किसी से अपसेट नहीं है, किसी के ऊपर उनको गुस्सा नहीं है, या फिर दे आर नॉट गोइंग टू हार्म एनी वन. ओके, सो दे आर टोटली क्वाइट एंड इनऑफेंसिव, जस्ट लाइक द पिक्चर्स ऑन द वॉल. जैसे कि वॉल पे कोई फ्रेम लगाई हुई है वो कुछ नहीं कहती, इट इज साइलेंट, राइट. इन द सेम वे द घोस्ट आर ऑल्सो क्वाइट एंड इनऑफेंसिव. सो योर स्टूडेंट्स, as silent as the pictures on the walls. This is a literary device you can call simile. And here the pictures and ghost are compared with each other. मतलब ghost को यहाँ पे pictures के साथ compare किया गया है. The ghost are being compared with the pictures. जैसे कि pictures silent है wall के ऊपर, वैसे ही ghost भी quiet है. ठीक है. The strangers at my fireside cannot see the forms I see, nor hear the sounds I hear. So the narrator of the poem, right, the person who is talking about the ghost, he says that the stranger at my fireside, that means there might be a person who is sitting next to him. He cannot see what the person or the narrator is seeing. मतलब जो बता रहा है ये सारी चीज़ें,
वो सब कुछ देख सकता है, बट दोज ऑल थिंग्स आर नॉट बीइंग नोटिस्ड और नॉट बीइंग हर्ड बाय द स्ट्रेंजर. द फॉर्म्स आई कैन सी, दैट मीन्स यर यू कैन मेक इट आउट कि या तो वो आदमी जो है, जो भी है, ठीक है, ही माइट बी हिमसेल्फ अ गोस्ट, दैट्स द रीज़न ही इज़ एबल टू सी एवरीथिंग, और ही इज़ हैविंग सच अ मेमोरी इन हिज माइंड कि उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए वो देख सकता है और सुन सकता है. वी डोंट नो अबाउट दैट, बट येस देर आर द चांसेस कि ये स्टोरी या फिर ये जो बता रहा है, जो नरेटर है, ही माइट हिमसेल्फ बी अ घोस्ट. वी डोंट नो अबाउट दैट, यहाँ पे कहीं पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, बट येस दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ही इज़ द ओनली वन हु इज़ एबल टू सी दिस घोस्ट, राइट. ये जो फॉर्म्स है, मतलब जो भी उनका प्रेजेंस है वो दिख रहा है उसको, या फिर जो भी आवाज़ें हो रही है, ही कैन ओनली हियर इट. ही बट परसीव्स वॉट इज, while unto me all that has been is visible and clear. That means the stranger is trying to understand what it is. Okay, he is trying to understand, he is trying to become aware of what all is going over here. But for me, मतलब जो नरेटर है उसको जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें विजिबल एंड क्लियर है. दैट मीन्स ही कैन सी द घोस्ट, ही कैन हियर द घोस्ट, एंड ऑल द इमेजेस आर वेरी क्लियर अकॉर्डिंग टू हिम. मतलब उसके सामने सारे जो इमेजेस है वो सारी चीज़ें उसके लिए क्लियर है. बट जो स्ट्रेंजर बैठा है उसके बाजू में, ही इज़ नॉट एबल टू सी दोज फॉर्म्स नॉर ही कैन हियर द साउंड. Now, what does he say? We have no title deeds to house or lands. Owners and occupants of earlier dates, from graves forgotten, stretch their dusty hands and hold in the mortmain still their old estates. So, what is he saying? That we don't have any title deeds to our house or land. That means जिस घर में वो घोस्ट बन के घूम रहे हैं, पॉसिबल है कि वो घर बहुत पहले उनका था, उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन इट कीप्स ऑन पासिंग ऑन, राइट. कि अभी जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स का घर है, वो आपके पापा को मिलेगा, आपके पापा के बाद आपको मिलेगा, राइट. तो वैसे जो जनरेशन के थ्रू पास होता है, तो जो जिसके नाम पे घर होता है और अगर वो मर जाता है, राइट, तो उसके नाम से ट्रांसफ़र होके दूसरे के नाम पर आ जाता है. इसीलिए वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उनके पास कोई टाइटल डीड्स नहीं है, दे डोंट हैव एनी title deeds. So title deeds means a kind of legal document which proves कि वो जो घर है वो उनका है. So he is saying that they don't have any title deeds to the house or lands because the owners and occupants of earlier dates from graves forgotten stretch their dusty hands and hold in the mortmain still their old estates. Mortmain means permanent ownership, right. Although they have died, but still they have the right over that house because वो पहले क्या हो चुके थे, पहले के ओनर थे वो उस घर के, एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड दोज हाउसेज व्हेन दे वर लिविंग, राइट. लेकिन अभी वो मर गए हैं, सो दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्रेव्स. ग्रेव्स मीन्स tomb, and they are stretching out their dusty hands and hold in mortmain still their old estates. Estate means property or the money, whichever they are having, right. And they are showing that we do still have the ownership of that house. जो house अभी किसी और के नाम पे है, लेकिन पहले किसकी ओनरशिप थी, वो उनकी ही थी, लेकिन अब वो मर गए हैं, राइट. तो अभी उनके नाम पर नहीं है वो घर, राइट. सो दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि येस द घोस्ट हु आर रोमिंग अराउंड, जो भी इधर घूम रहे हैं, उनके पास टाइटल डीड्स नहीं है, बट येस दे हैव दैट परमानेंट ओनरशिप ओवर हियर, ओके, बिकॉज दे हैव लिव्ड बिफोर in this house and they were the owner and they also occupied this house when they were living, right. अभी तो वो मर गए हैं. The spirit world around this world of sense floats like an atmosphere and everywhere wafts through these earthly mists and vapors dense, a vital breath of more earthreal air. So students, here the spirit world means,
स्पिरिट वर्ल्ड मीन्स द वर्ल्ड ऑफ घोस्ट, ओके, या फिर वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स। उन्होंने अपना जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ सेंस मीन्स वर्ल्ड ऑफ लिविंग पीपल, राइट, वर्ल्ड ऑफ लिविंग पीपल मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, राइट, उसके अराउंड एक एटमॉस्फियर की तरह फ्लोट हो रहा है। दैट मीन्स जैसे कि एटमॉस्फियर हमारे अर्थ को सराउंड करता है, राइट, वैसे ही ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है, द पोएट इज सेइंग दैट दैट स्पिरिट वर्ल्ड हैज़ सराउंडेड अस लाइक एन एटमॉस्फियर एंड दे आर फ्लोटिंग लाइक एन एटमॉस्फियर। जैसे कि एटमॉस्फियर है एक ब्लैंकेट जैसा, right, we can't see that, but yes, it is present over there. In the same way, the spirit world is also floating around the world of sense and everywhere wafts through these earthly mist. Waft means passes gently through the air. It's given over here, you can see that wafts का मतलब it keeps on moving just like air, ठीक है, जैसे कि हवा चलती है gently, right, you can say wind or breeze जो move होता है, वैसे ही ये जो स्पिरिट है वो भी एयर की तरह ही मूव होती रहती है। इट कीप्स ऑन मूविंग थ्रू दीज अर्थली मिस्ट एंड वेपर्स डेंस। दैट मीन्स अर्थ में जो मिस्ट है, यू कैन से द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड वेपर जो है उसके बीच से वो पास होता रहता है। जैसे कि एटमॉस्फियर है वैसे ही वो स्पिरिट वर्ल्ड भी हमारे आसपास घूम रहा है, ओके। इट इज़ ऑल्सो मूविंग एवरीवेयर, a vital breath of more earthreal air. Earthreal means unearthly. That means the thing which doesn't belong to earth. Okay. So उनका जो पूरा एक लेयर है, it is there and it feels like something unearthly is moving around our world. मतलब जो हम रह रहे हैं, right, जो लिविंग बींग्स हैं उनके आसपास एक चीज़ है या फिर एक लेयर है which is not belonging to the earth, but yes, we can still make it out. It is quite important. Vital means something which is essential and which is important. Okay, so ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। And students, here floats like an atmosphere, right? That is again a simile, you can say, right, because the spirit world is compared with the atmosphere. Now let's move on to the next page. Our little lives are kept in equipoise by opposite attractions and desires. The struggle of the instinct that enjoys and the more noble instinct that aspires. So he talks about our lives that are kept in equipoise. Equipoise means balance of forces, right? And that is because the opposite attractions and desires, as you know that opposite things always attract, right, and the desires that we hold, the struggle of instinct that enjoys, and the more noble, that means the behavior, or you can say the way we behave, the pattern of our behavior, right, whoever have a good instinct they enjoy, and the one who has more noble instinct that aspires, that means they want to rise high in their life. That means we want many things in our life, right, and we try to achieve those things, and these perturbations, this perpetual jar of earthly wants and aspirations high, come from the influence of an unseen star and undiscovered planet in our sky. So these perturbations means worries, right, all those worries which we have in our life, all the troubles that we face, all the problems that we face, and this perpetual jar, that means our never ending jar. Here students, they have objectified, and the jar is symbolizing our life, or you can say our mind, which is never satisfied. It has never ending feelings, never ending, you can say
we want so many things in life, right? We want, there are many things, जैसे कि कुछ चीज़ें होती है जो हमें एक्साइट करती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें गुस्सा दिलाती है, राइट? सो दीज ऑल एवर एंडिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस which are filled in our mind, or which are filled in our heart and brain. So here the jar is being used to symbolize our body, you can say. Okay, so this is another literary device over here. You can say it's a symbolism. They have used a solid object to show our feelings and emotions which we have, which are never ending. Perpetual means never ending earthly wants, right? When we are living on this earth, we want many things in our life, right? And we aspire for many things, for different things, and we want to achieve all those things. And while achieving those things, we get into troubles, we need to face problems, right? So ये जो सारी चीज़ें हैं, right, these come from the influence of an unseen star and an undiscovered planet in our sky. So all these things come from an influence of an unseen star and also an undiscovered planet in our sky. And as the moon from some dark gate of cloud throws over the sea a floating bridge of light, across whose trembling planks our fancies crowd into the realm of mystery and night. So the poet says that the moon that comes out from some dark gate of cloud. Dark gate of cloud means, you can say, there are dark clouds, and from those clouds the moon is appearing, right? We can see the moon between those clouds. तो वो जो clouds का पूरा जितने भी सारे उधर clouds है, उसको उसके बीच में से अगर मून निकल रहा है, तो पोएट कह रहे हैं कि वो उसका एक गेट है जिसके थ्रू मून आ रहा है. एंड ही इज थ्रोइंग ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट. दैट मीन्स जो मूनलाइट गिर रही है नीचे अर्थ पे, राइट? सो जो उसका पूरा स्ट्रीक ऑफ लाइट होता है, राइट, द वे ऑफ लाइट, इट्स अ काइंड ऑफ लाइन, राइट, अ बीम ऑफ रे, यू कैन से. इन द सेम वे जो मून से मतलब स्काई से लेके अर्थ के ऊपर जो लाइट गिर रही है, ही इज कंपेयरिंग दैट विद अ ब्रिज ऑफ लाइट, एंड ही सेज दैट इट्स अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट ओवर द सी. मतलब अगर वो लाइट अर्थ के ऊपर गिर रही है जहाँ पे सी है, राइट, सो द मून की जो वो मून लाइट है, ही इज कंसिडरिंग दैट टू बी द फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट, अक्रॉस whose trembling planks our fancies crowd into the realm of mystery and night. And across those trembling planks, trembling means moving planks. Normally bridge किससे बना होता है? Planks से, right? वो wooden planks होता है ना, उससे बना होता है, right? And they are being tied with a rope. Normally वो जो bridge होता है वो ऐसा होता है, right? Wooden वाला जो bridge होता है. So he is considering that floating bridge of light, उसके ऊपर हमारे जो thoughts है, हमारी जो memories है, वो wander कर रही है. It is going through those trembling planks. Our fancies crowd. Our fancies means our thoughts and our memory, our imagination, right? It is going through it into the realm of mystery and night. And where does it go? Into the kingdom of mystery and night. That means during the night time there are many things which happens and which we are not able to understand, right? And all the mystery which happens during night time. So उस kingdom में हमारे जो thoughts और imagination है, it goes over there through the trembling plank of that floating bridge. Okay, it's our thought, it's not the human being. Human being cannot go through that bridge. It's the bridge only for the ghost, right? वो नीचे आएगा, नीचे के स्टेंजा में, कि जो स्पिरिट वर्ल्ड है, इट गेट्स कनेक्टेड विथ आवर थॉट्स थ्रू दिस ब्रिज ऑफ लाइट, राइट? क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसमें काफ़ी सारे थॉट्स और इमेजिनेशंस चलते रहते हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली हमारी जो मेमोरीज़ है हमारे एंसेस्टर्स के लिए क्या, या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, जो भी है हमारी मेमोरीज, राइट, ऑल दोज थिंग्स मूव्ड इन आवर हेड, right? And it goes into that kingdom of mystery and night
थ्रू द फ्लोटिंग ब्रिज जो मून ने बनाया हुआ है, राइट। मून की जो लाइट है उसको कंपेयर किया गया है ब्रिज के साथ, ठीक है। जो मून लाइट है, मून की जो रेज नीचे गिर रही है अर्थ के ऊपर, उसको एक ब्रिज की तरह कंसिडर किया गया है यहाँ पे। पोएट ने उसको उस तरह से कंसिडर किया है। और हमारे जो थॉट्स है, दोज आर गोइंग थ्रू दोज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स। ट्रेम्बलिंग मीन्स मूविंग, राइट, शेकिंग। जो शेक करते हैं वो जो वुडन प्लैंक्स, उसके थ्रू जा रहे हैं। सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट देयर डिसेंड्स a bridge of light connecting it with this, over whose unsteady floor that sways and bends wander our thoughts about the dark abyss. So from the world of spirits there descends, that means ये जो घोस्ट्स है, राइट, ये जो पूरी दुनिया है घोस्ट की, जो हमारे अर्थ के आसपास है, राइट, इट कम्स डाउन। डिसेंडिंग मीन्स इट कम्स डाउन थ्रू दैट ब्रिज ऑफ लाइट। और वो ब्रिज ऑफ लाइट किसके लिए है? सिर्फ स्पिरिट्स के लिए, नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स। एंड दैट स्पिरिट वर्ल्ड जो है, इट गेट्स कनेक्टेड विथ आवर थॉट्स, इट गेट्स कनेक्टेड विथ आवर मेमोरीज। एंड हाउ डू इट कनेक्ट? इट कम्स थ्रू दैट ब्रिज ऑफ लाइट. दिस इज टोटली imagination, okay? So there is no truth in it. We cannot justify whatever the poet is saying over here. So don't take it as a fact. It's not a fact, okay, totally. So ऐसा मत समझना कि ये सच है, ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन है। और उनके हिसाब से ही सिर्फ ये जो मून है, उसकी जो मून लाइट है, इट बिकम्स अ ब्रिज जिसके थ्रू हमारे थॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं, बट वी कांट गो देयर। ओनली इट इज़ अ वे, वन वे, जहाँ पर जो स्पिरिट्स है, घोस्ट है, वो उस रास्ते से आते हैं। एंड इट गेट्स कनेक्टेड विथ दिस world of sense, or you can say with the world of living being, over whose unsteady floor that sways and bends. मतलब ये जो लाइट का फ्लोर है, राइट, इट इज़ क्वाइट अनस्टेडी and it keeps on moving and bending. Sways means it keeps on moving and it keeps on bending, and through that wander our thoughts about a dark abyss. That means a dark hole where our thoughts goes there, right? मतलब हमें आफ्टर लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम है। एक बार इंसान मर जाता है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। वी डोंट नो वेयर डज अ पर्सन गो, वेदर इट गोज इन हेल और अ हेवन, वॉट एवर इट इज़, वी नेवर थिंक अबाउट दोज थिंग्स, राइट। लेकिन कभी कभी हमारा जो दिमाग है, इट स्टार्ट्स वॉन्डरिंग अबाउट दोज थिंग्स, एंड दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड कि उस फ्लोर के थ्रू हमारे जो थॉट्स है, इट गोज टूवर्ड्स द डार्क एबिस. दैट मीन्स अ डीप होल, which that means we don't know anything about it, and that's why it is considered like that. Okay, so students, I hope that you understood the poem. If you have any doubt, please ask me in the live class, and we would be doing the exercises also in the live class.